हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑफिस गेमर्स। एंड आज हम खेलने वाले हैं WWE 2K25 एंड ये काफ़ी अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स हैं, जैसे प्ले जिसमें आप मल्टीप्लेयर 6 लोग का खेल सकते हैं। देन आपका माई फैक्शन सेक्शन होता है, यूनिवर्स जहाँ पे आप अपना कैरेक्टर बना के उसका एक करियर खेल सकते हैं, माई राइज जहाँ पे आप अपने फेवरेट सुपरस्टार का करियर खेल सकते हैं, एंड शोकेस जिसमें आपको WWE की हिस्ट्री के बारे में, प्लेयर्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। एंड मेरा ये सबसे फेवरेट रहता है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव आपको गेम प्ले मिलता है। उसके अलावा आपके पास क्रिएशन सीरीज़ है जहाँ पे आप अपना सुपरस्टार, एंट्रेंस, चैम्पियनशिप एक्सेट्रा बना सकते हैं एंड मच मोर। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विथ शोकेस। एंड मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ गेम खेल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास ब्रेक है, थोड़ा सा आज काम लाइट है। सो एंड एज यू ऑल नो कि वैसे भी मेरे पास टाइम रहता है ऑफिस में। सो लेट्स गो। ओह गाइस, ये योकोजुना है। गाइस जब हम छोटे होते थे कमाल का रेसलर होता था। इसके गाइस एक सूमो रेसलर है जो टर्ल 2 और WWE रेसलर। गाइस ब्रेट हार्ट अपने टाइम का बेस्ट था। ही वाज लाइक ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, ऐसा बड़ा रेसलर होता था ये। जॉन सीना जितना बड़ा रेसलर होता था अपने टाइम पे। Yokozuna is my middle name. I'm named after him. I carry so much pride and weight on my shoulders just because of what he's done for this business, and who he is as a person too. It's a cool middle name to have, man. I represented the pride, man, that I have. Hopefully, man, I'm making him proud to do it. The manner in which Yokozuna held an incredible size. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा मूवी जैसा चलता है। WWE universe, who to that point were used to their monsters hitting hard but moving slow. Yokozuna broke the mold, punishing opponents with super kicks, uranagis, leg drops, and of course, his devastating bonsai drop. A maneuver so effective that once it had connected, nobody kicked out of it. Nobody. Rodney was a very unique talent. I think the way he was able to handle all the pressure, it was kind of parallel to how he was in the ring. For someone to be so big and to be so nimble, you just don't see that very often. मुझे अभी से फीलिंग आ रही है, बहुत मजा आने वाला है। Solo guys, singles competitor guys that was able to go out there and really just make waves, make a big splash. I mean, pun intended, I guess. That fool jumped in the pool, he'd knock out all the water, and that's the way it felt sometimes. He would go into those arenas and just suck in all the energy and be able to give it back. So when I look at Rodney, I see someone very similar to me, someone who understands the top, very, very top of the game, the top position, and everything that goes along with it. भाई योकोजुना अपने टाइम पे यूजुअली टॉप पे रहता था। सारे हेवी वेट चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोनों होल्ड करी हुई है इसने। देयर वर मेनी मोर चैम्पियनशिप उस टाइम पे। Yokozuna entered the ring totally focused on the task at hand. And on that night, he not only got revenge, but his victory would send Hogan packing from WWE for nearly 9 years. Hulk Hogan is finished. Many felt that Yokozuna had indeed killed Hulk-a-mania. गाइस हल्क हॉगन को डिफीट करना बड़ी बात थी। 9 इयर्स के लिए का करियर पॉज करना ऑन अ डिफरेंट लेवल।
So guys, जैसा कि आप इसमें सुन ही पा रहे थे कि काफ़ी बड़ा रेसलर था योकोजुना, एंड कैसे उसने धीरे 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 करके अपना पूरा अचीव किया। एंड ये उसकी आप एंट्री देख सकते हैं, बट एंट्री को तो हम स्किप ही कर देंगे। एंड आई थिंक लेट्स कंटिन्यू टू द मैच सीधा ही। सो भाई इसमें ना हमें स्पेसिफिक टास्क होते हुए परफॉर्म करने होते हैं। ये हेवीवेट चैम्पियनशिप टाइटल है। सो अब इसमें हमें डिफरेंट टास्क मिलेंगे जो हमें परफॉर्म करने होंगे। आप टॉप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे कुछ टास्क उन्होंने हमें दे रखे हैं। Yes. थोड़ा सा हमें प्लेयर हमेशा इसमें स्लो ही मिलता है, शोकेस इसमें हमारे पास थोड़ी सी हमेशा डिसएडवांटेज रहती है। अभी आपको धीरे धीरे देख के पता लगेगा। हमें मिलता हमेशा वही प्लेयर है जो जीता है, बट उसके साथ हमें उसकी लिमिटेशंस को भी फेस करना पड़ता है। हम ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एक्स दबाया वाला। गाइस अब यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है 30 सेकंड्स का, हमें इसे कॉर्नर में ट्रैप करना है। सो ऑब्जेक्टिव फील हो गया। देखते हैं एंड में हमें पता लगेगा इसका क्या होगा। फिनिश हो गया है। अब हमें से तो ऑरेंज करना है नीचे डैमेज बार पे इसके, एंड दूसरा में क्रशिंग स्टैंडिंग बेयर हैव राइट ट्रिगर एंड बी बटन। इसने मैच नीचे रिवर्स कर दिया। बच गया। Can we talk about Yokozuna's meteoric rise in WWE? He's accomplished quite a lot in a short amount of time. Just look at the man's track record at major events. He made his premium event debut in a quick win. थोड़ा हमने इसे मजाक में ले लिया है, बट ये है नहीं उतना। And then captured the WWE title in the main event of WrestleMania. But that momentum ground to a halt after Mr. Fuji's ill-timed challenge ended. Great trouble here. Can he get it fully locked in? Targeting the shoulder with the club. Escaping a takedown. ग्लिच हो गया था गाइस गेम में, आपने देखा होगा बीच में आया ही नहीं हमें कौन सा बटन दबाना। Momentum is really on Yokozuna's side. Yokozuna making Hogan regret wanting this match. I love it. Deconstructing the knee. क्या है? Squeeze the life out of Hulkster with a crushing standing bear hug. RT and P. ये था। एक बार इसे खड़ा कर You can see Mr. Fuji at ringside. He showed he will do anything. Oh no, bear hug applied. This guy right there. फ्रंट ग्रैब पे हमें फिर अब ए बटन दबाना है। ऐसे किया फ्रंट ग्रैब एंड दबाया ए, एंड ये कंप्लीट हो गया है। Belly to belly slam. That's gonna be the end of Hulkamania. Jimmy Hart trying to rally. And a kick out by Hogan with authority. Hulk Hogan's not done yet. Hulk Hogan is coming alive. ऐसे कुछ करने वाला है, मेरे को बड़ी फीलिंग आ रही है, एंड हमें अब थोड़ा खतरा हो सकता है। Yokozuna back to his feet. Big chop to Hogan. And Hogan
Hogan starting to hulk up here. How many times have we seen this over the years? तो बस जब भी ऐसा करता था तब हल्क होगन, इसके बाद हमेशा हल्क होगन काफ़ी डैमेज करता है प्लेयर को। गाइस आपको पता ही होगा इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक्स भी इन्वॉल्व होता था, हमेशा दिखाते हैं इसके बाद जैसे इसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ गई है। I can't believe Yokozuna's still standing. Hogan continuing to pour on the offense. A second big boot, but मानना पड़ेगा हमारे इस प्लेयर की ताकत को, क्योंकि एक्चुअली इसके बाद खड़े रहना मुश्किल है। Wait a minute. What is that photographer doing on the apron? There's a match going on. What the heck? Ooh. What was that? What in the world just happened here? Yoko says this one's over. Standing. Side drop. The challenger might have what it takes to win this. Off the ropes into a Yokozuna demonstrating his full power. Hogan's in trouble. एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट होने वाला है, हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हमें सिर्फ कॉर्नर में 30 सेकंड में क्रैक करना था, तो हमारा वो रह गया। हमारा तो फिनिशर आ गया। इसकी फिनिशर चेक कर लेते हैं कैसे होती है। एंड फिनिशर फ्रंट पिन कॉम्बो, स्पाइन साइड पिन कॉम्बो, इस मोबाइल से कॉर्नर में क्रैक करना है तो हमारे पास फिनिशर का ऑप्शन आना चाहिए। स्किल और फिनिशर पे हमने विन कर लिया है। जिस टाइटल का रेप्लिका एक्चुअली मेरे पास है, बचपन में जब हम छोटे होते थे तो ये बेल्ट्स फॉर सेल होती थी टॉय शॉप्स में, एंड मैंने 4 खरीदी थी। एंड किसी दिन आई डेफिनेटली पोस्ट देम ऑन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एंड लिंक्स टू माई सोशल मीडियाज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आपने देखा हमारी 5 चीज़ें नहीं खुली हैं, दैट्स बिकॉज हमारा वो एक टास्क रह गया था। एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि उसे ऑफ स्ट्रीम या तो कंप्लीट कर लूँ या उसे रिकॉर्ड करूँ एंड उसका एक सेक्शन अपने नेक्स्ट एपिसोड की क्लिप में आई डेफिनेटली पुट आउट। अगर हम रीफाइट करेंगे दैट विल बिकम बोरिंग। तो आइए नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, एंड ये हमारा नेक्स्ट मैच है। नेक्स्ट मैच में ये टैग टीम मैच लग रहा है, एंड इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है, हमें दोनों कैरेक्टर्स को क्योंकि मारना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पिन करने की कोशिश करेंगे तो वो आके ज़रूर वो कर देगा।
वो है कि इसमें जो कंट्रोल्स है ना वो एक्सबॉक्स दिखा रहा है एंड वो PS के होंगे दैट विल बी बेटर। सो मैं देख रहा हूँ इसमें तो किसी तरह अगर वो मुझे सेटिंग में तो नहीं रहा है, बट मैच के बाद हम ट्राई करेंगे कि सेटिंग में ना चेंज कर लो तो मैं सबमिशन वगैरह हमारा थोड़ा टफ ही जाए एंड हम एक टैग दे के देखते हैं। Slow Rick for the moment. Yeah, Fatu just brought the fight to him. Ooh. I've seen Samu and Fatu headbutt each other during matches. If they do that to their own flesh and blood, who knows what they'll do to the Steiners? It's just a byproduct of the brutal take-no-prisoners offense of the head shrinkers, Byron. These guys will bite, scratch, and claw their way to a win. Rule will be damned. And with Rick and Scott coming from an amateur collegiate background, they might be a bit more hesitant to bend the rules. Hopefully the Steiners can adapt. In the tag division tonight could really be their coming out party. Well, they certainly have a tradition out there, Cole. The man in their corner, Alpha, has held the WWE tag titles on 3 occasions, and he's primed to bring the head shrinkers to the top as well. Oh, look at this ruthlessness in the bottom turnbuckle. A bit of provocation from Samu. Shot to the chest. Big fight feel in Las Vegas as gladiators face off here at WrestleMania 9. And we are watching 4 men who would have been right at home inside of a Roman Coliseum. The head shrinkers and the Steiners are ready for a true battle. Come on, yaar, come on, इस बार नहीं मत साले को मत come on go come on go The head shrinkers and Steiners are 2 of the brightest young teams in WWE, but they both come to this match with a few years of experience in WCW. The Steiner brothers earned many tag accolades in WCW, but Rick and Scott have their share of singles titles too. Meanwhile, Samu and Fatu were never quite able to break through before WWE. You know that has to serve as motivation for the head shrinkers tonight. Oh, the reversal by Steiner. These two have known each other so well. Another hand shot. As was set up in the corner of the ring. Samu and Fatu already some success in the tag division tonight. Could really be their coming out party. Well, they certainly have a tradition of Old Cole. The man in their corner, Alpha, has held the WWE tag titles on 3 occasions. And he's primed to bring the head shrinkers to the top as well. There may be an abundance of tokens in the arena today, but you're not going to see a lot of wrestling on the head shrinkers. They're just looking to hurt the Steiners. And that actually may help Samu and Fatu here. The Steiner brothers have earned most of their wins by utilizing their amateur wrestling skills. I can't imagine they'll get many grappling opportunities against dedicated brawlers like the head shrinkers. Suplex attempt. Able to go behind, though.
Nice. Top block takes him down. The whole world is focused on WrestleMania 9 tonight. The last thing you want to do is come out on the wrong side of a match like this. That's right. A big win at WrestleMania means a big boost in the tag division and a substantial winner's purse. I don't think the head shrinkers concern themselves much with the financial matter, Saxton, but they are dead set on proving they're the toughest dudes around. And get sent right into the corner. Oh, that'll turn your skin red. Steady stream of moves, taking out Steiner. Seeing some high-impact offense from Samu and Fatu thus far. I'm not sure the head shrinkers are even going for the victory. They just want to destroy the Steiners. Brutal impact into the corner. Reversal. And that turns things around. WrestleMania 9 shaking up to be a big night in the tag division, guys. Indeed it is, Michael. Two great young teams competing now. And later tonight, none other than Hulk Hogan will lead the Mega Maniacs against Money Inc. for the tag team titles. Oddsmakers in Nevada have the smart money on Hulk Hogan leaving Vegas with the gold tonight. Tag made, double team. Gonna send their opponent across the ring into the ropes, and double chop takes them down. Putting up a united front as this match continues. Uncorked a big punch. Head shrinkers accompanied at ringside by Alpha, but he's not the only tag team legend serving in a managerial role tonight. That's right, Michael. Just like Alpha, Mr. Fuji earned many WWE tag titles as a wrestler. But now, he's hoping to lead Yokozuna to the WWE Championship. And looking at all the top young talent in this ring, I see many other main event stars of the future that could follow the lineage of Yokozuna. Good. Taking flight from ring post to ringside, risking it all paid off. And now gets tossed into the ring. Dominating shoulder tackle. And we are really seeing the amazing skill sets of all four men in this tag team showcase. Well, we already knew about the brawling of the head shrinkers and the grappling of the Steiners, but men as big as these four behemoths should not be able to fly around the ring like they have thus far. It is made for an extremely tough act of... To grab, then press B plus towards root. Press B while holding L. Follow, guys. Looking to put an end to this. Snap! Pile driver. Power slam. Getting him right into the corner. Boom! What a right punch. As we find ourselves surrounded by all this pageantry, do you think either of these teams is feeling the pressure of their first WrestleMania? I can tell you that Samu and Fatu truly did not care. Alpha has turned these men into brutal fighters who simply want to destroy their opponents, no matter where the fight takes place. And as for the Steiners, we know they have big match experience, tons of amateur championship bouts in college, and some of WCW's biggest events. But even those can't hold a candle to the spectacle of WrestleMania. Dominating shoulder tackle. Coming in off the tag. And Samu is showboating right now.
नहीं आ रही, खोल भी नहीं रहा। He's hurled out and crashes down to the floor. From the top, crash landing. Got out of the way, but can he capitalize? Terribly painful. तो हम ये कर पाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। Driven down. Samo's gaining the upper hand. The head shrinkers smartly keeping themselves out of the grasp of Rick and Scott Steiner. There is a method to the madness of the head shrinkers. Boom, running FTO plants. Nicely done. Just ejected from the ring. Boom. Oh my goodness. Samu trying to bring the audience along. Have you ever seen a human being tossed like that? And now Scott is getting beaten down. And Steiner needs to find an opening fast. Their opponent gets countered with a right hand. And guys, what a war we're witnessing between the Steiners and the head shrinkers. This is the trickiest bet in all of Vegas, Cole. Both teams so evenly matched, I wouldn't know who to bet on. Hellacious power slam. And he's tagging his partner in. And tag. He finally made it. Working on their arm. तो गाइस हो गया है। French suplex. इसी बंदे के साथ हमारा दिवाली में ठीक हो जाएगा। Oh my goodness, dribbling the opponent's head like a basketball. She's starting to feel the force of this attack. And there goes Steiner sent outside the ring. Fatu like a one-man wrecking machine right now, cleaning house. Oh, look at this, the power by Scott Steiner. But the tag was made and Scott not aware. Big kick. Scott Steiner did not see the blind tag made by Samu. Oh, this is not looking good for Steiner. And this is what the head shrinkers do. Top-tier tag team wrestling. Steiner didn't see the tag, decided to hot dog around, and got a foot in the face for it. And he's looking out of sorts now. Yeah, holding strong for this long in a tag team match is commendable, but it might be time to tag out. What a clothesline in the corner. Stomping down. And into the turnbuckle he goes. Device. He's starting to look battered. At this point in the match, I say make the tag and recover it. Has the opponent down. Devil clutch locked in, agonizing squeeze of the tap. बटन दिखे तो गाइस, बटन दिखे तो हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। गाइस ये तो हमारे साथ सही नहीं हुआ। बट एनी विच वेज गाइस, आई थिंक आज का एपिसोड यहीं पे हम एंड करते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड को हम इसी फाइट से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आज के एपिसोड में मेरे को काफ़ी मज़ा आया खेलने में, आई थिंक आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए।
अगर आप कोई और गेम देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल गिव मी मोटिवेशन कि मैं और अपने काम से छुप छुप के ब्रेक्स ले पाऊँ एंड आपके लिए और गेमिंग वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।